again in this live session. Hello everyone, welcome to this class. Guys, am I audible and visible to all of you? Yes? Good. Hello Kunal, hello Pooja, hello Neha, hello Atul, hello Suraj, hello Pratisha. A very warm welcome once again in this live session. I hope that you and your family members are safe and you all are doing well. Students are still joining. A very warm welcome once again, everyone. Settle down fast. Suraj is saying, sir, no AV. Please refresh at your end. Suraj, please refresh at your end. So guys, today's session will be on, basically we are starting with new chapter, and that is heredity and evolution. That is a new chapter. Generally, 2 to 3 questions are always asked in national level exams like NTSC, KVPY, Olympiads. Also, this chapter is very important for your CBSE board exam. And you all know this new year started with a very new positive vibes, right? And there is a very good gift for all of you. It's a kind of new year gift, you can say. Do you know what is the gift? The gift is your exams are now being postponed. It will be from 4th of May. So that is a very good news for all of you. This is the time when you are getting sufficient, very good time. You are getting sufficient time, right? Alok is saying, sir, कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ आपसे? Same here, Alok. Hello. So guys, you are getting enough time to prepare, to revise, not only once, not only twice, not only thrice, not only 4 times, but you can revise at least at 5 times each chapter. 5 times each chapter. Mark my words, you are going to secure more than 95 marks out of 100. If you are, following the way I'm saying. The very first thing is follow your NCERTs. For example, life processes is a very good chapter, right? So once you read the NCERTs line by line, right, underlining the important terms, underlining the important things written in the NCERTs, once you complete, then again go second time. Once you complete the second time, go with the third time, right? Not एक बार में नहीं करना ऐसे, है ना? अलग अलग slots अलग अलग दिन पे करना है, right? एक बार में कभी नहीं करना है ऐसे. Okay. So now let's begin this particular session. The chapter name is Heredity and Evolution. ओके, लैग हो रहा है. अगर लैग हो रहा है तो प्लीज रिफ्रेश कीजिए अपने एंड पर. बच्चे, अगर लैग हो रहा है प्लीज रिफ्रेश. बच्चों, ये चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. सभी को दिख रहा है चैप्टर का नाम? बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम के लिए नहीं, एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 से 3 क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं यहां से, राइट? लाइक मैं लास्ट ईयर की बात करूं, सो लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे आपके बोर्ड एग्जाम्स में. यस. सो चलिए मूव करते हैं बच्चों. हेरिडिटी जो होता है, मेनली बच्चों याद रखिएगा, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स से आपको मिला है, राइट? लाइक कलर ऑफ योर स्किन, कलर ऑफ योर आईज, कलर ऑफ योर हेयर्स, हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल. सो ये सब चीजें जो है, ऑल ऑफ दीज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट? सो हाउ इट इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, देन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एंड सो ऑन, राइट? देयर इज समथिंग बिहाइंड इट. या, इट्स नथिंग बट जेनेटिक्स. Right, we will understand the genetics. Now, genetics is the term which was first introduced by a very known scientist at that time, है ना? And the name of that scientist was William Bateson. So याद रखिएगा, William Bateson in 1905 he had coined the term genetics. ये याद रहेगा सभी को. Is this thing clear?
But what does this genetics actually mean? The genetics basically is a branch of science that deals with the study of heredity and variation. Okay, so genetics is the branch of science that deals with the study of heredity and variation. Who had coined the term genetics? The term genetics was coined by William Bateson in 1905. Now the question arises, sir, what is heredity and what is variation? Now, please do understand, heredity is nothing but transmission of characteristics from one generation to the next. Transmission of characters from one generation to next generation. Is the point clear to everyone? Like you all know the color of your skin. Color of skin. Color of eyes, hair, even the height of an individual. है ना, ये सारी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन तक पास होता है ना, और इसी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं हेरिडिटी. सो हेरिडिटी इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एग्जैक्टली, ईयर लोब्स. यस आमेन. नाउ व्हाट इज वेरिएशन? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपके घर में कौन कौन है बताइए. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? Four. Many of you are saying 4. Even in my family is a joint family and there are many members, right? So, so let's suppose this is you, right? And this is your cousins, right? Okay, and ये आपके पेरेंट्स हैं, राइट? सो बेस्ट थिंग इज प्लीज रिमेंबर, क्या आप और आपके, दिस इज यू, राइट, एंड दीज आर योर कजन्स. सो क्या आप और आपके बाकी कजन एग्जैक्टली सेम है? एग्जैक्टली नो. द आंसर इज नो. There is always differences, right? There may be some similarities but not always exactly similar. Exactly means एकदम photocopy, right? Like plants को हम देख के नहीं बता सकते because they are basically in many of the cases in asexual reproduction exact copies बनते हैं, right? Asexual में तो exactly बनते हैं, right? They are similar but not congruent. Don't put maths over here, right? ये maths नहीं चल रहा. This is biology. Okay. Don't apply A, S, R, H, no, that is not needed here. Okay. So now let's move. Wow, sir, you know it, of course. Of course, I should know it, right? चलो आगे बढ़ते हैं. So there is always differences in you and your other family members, your cousins and all, right? Okay. And there is also differences in between you, your cousins and your parents, right? Yes. Your siblings, if I say siblings और आपके parents में भी differences होंगे, right? So you can say differences in the members of a species. Differences in members of species
नेहू सी वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. हमारा 4th जो क्लास होगा वो इसी पर है, राइट? ब्लड ग्रुप एंड सेक्स डिटर्मिनेशन. सो हम उसको अच्छे से करेंगे, डोंट वरी. आई विल गिव द रीजन प्रॉपरली ओवर देयर. ओके नेहू, चलो ध्यान से देखिए आप. डिफरेंसेस इन मेंबर ऑफ स्पीशीज, और यू कैन से differences in offspring and their parents, right? Or differences in offspring and parents. इन differences को ही क्या बोलते हैं बच्चों? These are nothing but called variation. So variation समझ में आया आप सभी को? Variation is nothing but differences in members of species, or you can say differences in offspring and their parents. Okay? Good. Now moving to the next thing. Okay, now let's see. Introduction to genetics. We have started. चलो बताओ मुझे, who had coined the term genetics? जेनेटिक्स टर्म किसने क्वाइन किया था? कम ऑन. इट वाज नन अदर देन, वेरी गुड साई श्रीदुला, वेरी गुड एवरीवन, विलियम बेटसन इन द ईयर 1905. और ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, आई एम मेकिंग स्टार ओवर हियर, एनटीएसई 2015 में, केवीपीवाई 2017, है ना? ये दोनों ईयर आए हुए क्वेश्चन है इस पे. हु हैड कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स? विलियम बेटसन, राइट? Later on, many scientists came and they basically performed their experiments on different. सर KVPY का फुल फॉर्म बताइए. ओके आलो. K for किशोर, V for वैज्ञानिक, P for KVP, P for प्रोत्साहन, Y for योजना, राइट? किशोर के वैज्ञानिक, V, P for प्रोत्साहन, Y for योजना. This is a national level exam conducted by Government of India, right? It's a national level exam. To select the meritorious students. With extraordinary brain. Which are mainly interested in scientific or research things, right? Now I hope this is clear to everyone. How to attempt it? Okay. Once you will be connected with me, I will share all the details with time, right? When you will be in 11th standard or in 12th standard or in your graduation, right? You are getting the chance to meet with these eligibility criteria, right? But that's not possible. Pooja, yes, you can attempt, but yes, that is not in the eligibility criteria. 9th and 10th में आपने बच्चे NTSC दिया होगा for sure. पूजा, आपने NTSC दिया था, वो KVPY नहीं था. Okay, KVPY is basically for 11th, 12th and graduation. Yes. Okay, maybe yeah, maybe just you have tried, just you have filled with the not proper information, so that may be accepted, but later on when it is verified, that will not be accepted for sure. Okay? Okay, now please concentrate in the class. Don't deviate from the topic, right? Ongoing topic. So, genetics is the science which deals with heredity
and variation of inherited characteristics amongst the organisms. Like in this, you can see this is father, this is mother, and in the next generation you can see this girl. This girl is having eyes similar to the mother, right? अब यहाँ पे देखिए इस बॉय का जो eyes है that is similar to the father. Yes or no? Yeah. And in the next generation, देखो next generation में you can see this boy is having hair like father, and it's a blended mixture, you can say, right? So we are getting some characteristics from our parents, and basically genes होते हैं जो pass on होते हैं from one generation to the next generation. And what is this gene? Gene is nothing. Remember, this is the DNA. अब सभी को पता what is this? This is DNA, deoxyribonucleic acid. This is the genetic material in most of the organisms, right? It carries the information, yes. A segment of DNA is known as gene. Gene controls, gene basically it codes for one protein. Gene codes for one protein. And guys, and thereby one character is expressed. Okay, so please do remember, gene is very important, right? So gene is the unit of inheritance, you can say. It is the unit of inheritance. It is the way by which the information is passed to the next generation. Now, question arises, who had coined the term gene? ये जो term था gene, ये किसने coin किया था? Now, for this, please do remember, Johansen जो थे, Johansen was the person who has coined the term gene, right? This question was asked in KVPY 2018. Please go and check the paper. Johansen had coined the term gene. Very simple, but very important. This is clear to everyone? Is this thing clear? Yes? Okay, fine. Now, heredity. Heredity is the transmission of genetically based characteristics from parents to the offspring. ये तो मैंने आपको already समझा दिया है. I've already explained you, right? So now, let me explain you the next thing. Let me change my color first. This is not looking good. Black color. Okay, fine. Now this is cool. Most characteristics of an individual are similar to their parents. ये बात clear है सभी को? Is this thing clear? Good. These features are inherited by offspring through some factors called as gene. देखो फैक्टर जो था ये मेंडल ने बोला था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं बच्चों, लेकिन लेटर ऑन जोहानसन हैड टोल्ड दैट बच्चों ये फैक्टर्स थोड़ी होते हैं. दीज आर जीन्स which are basically transmitted from one generation to the next generation. These genes are transmitted to one generation to the next generation, right? Okay, तो genes जो थे वो introduce किया था जोहानसन ने. Moving with the next term, that is variation. ये तो मैंने already आपको समझा दिया है. Variation is the dissimilarities among the member of a species, or you can say among the offspring of same parent, right? This is variation. Like आप देख सकते हो आप और आपके siblings, आपके भाई बहन सब, right? Eye color may be blue, brown, hazel green, है ना? अलग अलग हो सकते हैं, तो differences तो है ना? So these dissimilarities or differences are known as variation. Is this thing clear to everyone? Moving to the next thing. आपको ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने reproduction पढ़ लिया. You all had gone with chapter reproduction, है ना? I have explained this chapter very well.
Exactly, due to variation, Soumya, due to variation. सर आपकी तरफ से लैग हो रहा है, प्लीज रिफ्रेश कर लो. नो, इट्स ऑल राइट एट माय एंड. वेरिएशन इज जीन? नो, नो सूरज. वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस और डिससिमिलैरिटीज. Differences, or you can say dissimilarities. Okay, like मैं और मेरा भाई और मेरे बहनें जो हैं वो exactly similar नहीं होंगे. There will be some differences, right? ये variation है. Okay, अभी मैं बताऊंगा वेरिएशन क्यों आता है. I will explain that. मैं वही तो समझाने जा रहा हूं बच्चे. Yeah, I'm going to explain that only. Don't worry. So reproduction. So बच्चों आपने reproduction में पढ़ा था कि there are how many modes of reproduction? Tell me. 2 modes. And what are these? What are these 2 modes? One is sexual and the other one is asexual. Very simple. Acha, in sexual and in asexual, in which out of these two parents, that is biparental, it is absolutely sexual. Okay. So in sexual mode of reproduction, it is basically biparental in nature, means 2 parents are involved. Usually it is biparental, है ना? But in asexual reproduction, it is always uniparental, means always single parent is involved. Okay. Now, since 2 parents are involved and both of them are of opposite sex, means one is if male, other one will be female, and both of them releases the gamete. That is, male releases the male gamete, female releases the female gamete. Can you tell me what is male gamete in human beings? That is sperm. What is female gamete? That is egg or ovum, right? Now these gametes are carrying the genetic information, right? These are carrying the information from the parents. And you all know both these gametes are fused. Yes or no? Both of them will be fused. And the fusion of male and female gamete is known as fertilization. Now, what will happen? Crossing over will happen, right? Male and female gamete will be fused, and this will result in the formation of zygote, in which characteristics, means chromosomes from male and female, both of them are there, right? And crossing over takes place, right? That result in variation. That is the main cause of variation, since 2 parents are involved. Okay? So in higher grade also you will understand, let's suppose this is the chromosome from the male parent, this is the chromosome from the female parent. There will be crossing over. तो फीमेल वाले में कुछ मेल का पार्ट आएगा बच्चों, एंड मेल वाले में बच्चों देयर विल बी सम पार्ट ऑफ फीमेल आल्सो, है ना? यू विल अंडरस्टैंड दिस इन योर हायर ग्रेड. सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स. ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन. बट एसेक्सुअल में क्या होता है? यूनिपेरेंटल है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, सिंगल पेरेंट. और जब सिंगल इन्वॉल्व है और वहां पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता गैमेट्स का, नो गैमेट इज इन्वॉल्व, नो गैमेट फॉर्मेशन.
सो क्या फर्टिलाइजेशन होगा इस केस में? नो फर्टिलाइजेशन, और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं बच्चों, है ना। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने उनको क्लोन्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज क्लोन्स, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है, क्या वेरिएशन सिर्फ सेक्सुअल में होता है? डू वेरिएशन अकर्स ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यू विल से यस, सेक्सुअल में तो होता है वेरिएशन फॉर श्योर, बट ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल में वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता। एसेक्सुअल में भी वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन कैन अकर, बट दैट इज वेरी रेयर, दैट इज वेरी रेयर। देखो, कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे पीएच चेंज, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, है ना। सो देयर कैन बी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ऑल्सो, उसके वजह से वेरिएशन आ सकता है ना। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है, डीएनए कॉपी जब होता है, उस टाइम एरर आ जाना, राइट, या इनएक्यूरेट कॉपी होना। सो अगर डीएनए कॉपिंग में इनएक्यूरेसी आता है उस टाइम भी वेरिएशन आ सकता है, इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, ठीक है। तो बहुत रेयर कंडीशन में आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, ठीक है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, डीएनए कॉपिंग में एरर हो सकता है, इनएक्यूरेसी हो सकता है। ओके विशाल, एक्चुअली डीएनए कॉपिंग बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, राइट। सो जब ये कॉपी हो रहा होता है डीएनए, उस टाइम बच्चों देयर मे बी चांसेस कि कुछ एरर आ जाए, कुछ इनएक्यूरेसी हो सकता है। ये बात क्लियर है सभी को? गुड, चलिए आगे बढ़े, लेट्स मूव, कैन वी मूव? ओके, सो बच्चों क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? एंड नन अदर देन दैट पर्सन इज वेरी फेमस ग्रीगर जोहान मेंडल। ग्रीगर जोहान मेंडल, ग्रीगर जोहान मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बात जान के आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि ग्रीगर जोहान मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे सैंपल्स लिए, अप्रोक्सीमेटली 14,000 सैंपल्स, और उन्होंने उस सैंपल्स का यूज करके अपने ऑब्जर्वेशंस किए थे, राइट। एंड बच्चों ग्रीगर जोहान मेंडल जो थे, he was the scientist who actually made us understand the genetics. He made us to understand the depth of the genetics. So thereby he is known as father of genetics. Okay. So now let's see something about Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel. So Gregor Johann Mendel was the first person to carry out the study of transmission of characteristics from parents to offspring. He also proposed that heredity is controlled by factors that were later identified that these are not factors, ये होते हैं बच्चों genes. So genes किसने दिया था बच्चों? Basically genes was later identified by Johansson. ये मैंने आपको already बता दिया है. Now Gregor Johann Mendel selected pea plant for his experiment. And the biological name of pea plant is Pisum sativum. ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, और आई एम मेकिंग स्टार ओवर हियर. Pisum sativum बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. प्लीज डू रिमेंबर द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी प्लांट. पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम विल बी Pisum sativum. ये बात क्लियर है सभी को?
Pisum sativum. Okay, let me refresh. No worries.